वेलकम टू mycodes.com। आज हम कुछ अदर कंट्रोल्स के बारे में देखेंगे, स्मॉल कंट्रोल्स। एक तो है स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू आप इसका पर्पस, इसका यूज है, इसका पर्पस ये कंटेनर है। ये एक्चुअली कंटेनर है। इसके अंदर आप जो इंफॉर्मेशन शो करोगे या कंट्रोल्स ऐड करोगे वो स्क्रॉलेबल होना चाहिए। जैसे एक टेबल व्यू आता है। टेबल व्यू क्या होता है? इन्फिनिट आप स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते हैं, ठीक है ना। वो तो टेबल व्यू का डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल है। लेकिन जो आइटम स्क्रॉल नहीं है, सपोज आपका एक व्यू है, एक फॉर्म है, राइट। एक सिंपल व्यू है, नॉर्मल व्यू है, लेकिन उसका जो डिज़ाइन ऐसा है कि यूजर को वो सिंगल फॉर्म में बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, बहुत सारे मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, तो यूजर क्या करेगा, स्क्रॉल व्यू का यूज़ करेगा, क्योंकि ताकि सिंगल व्यू में वो पूरा फॉर्म को कंप्लीट कर दे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल व्यूज। मीन्स नेक्स्ट उससे क्या होता है ना, यूजर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए कि भाई एक फॉर्म फिल कर दिया, फिर से और एक फॉर्म फिल करना। वो थोड़ा सा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब वो लगता है कि हाँ ये फॉर्म 10 कॉलम्स का था, मैंने फिल कर दिया, फिर से और 10 कॉलम्स फिल करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा लेजीनेस हो जाता है वो ह्यूमन बिहेवियर आप यूएक्स पॉइंट व्यू से देखिए। लेकिन अगर सिंगल फॉर्म में आप दे देंगे 15 कॉलम्स एक साथ दे दोगे ना, वो फिल करता जाएगा, फिल करके डायरेक्ट सबमिट कर देगा। तो उससे क्या होगा ना, उसका एक जो होता है रिदम होता है, रिदम ब्रेक नहीं होगा। वो सिंगल फॉर्म में वो फिल करेगा, जो भी उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी फॉर्म का जो रिक्वायरमेंट है वो भरता है, फिल करके सबमिट कर देगा।